assalamu alaikum, welcome to my Neurohub. We are back again with another video after a long time. अपने चैनल पे हम हाजिर हैं और हमारा टॉपिक जो है वो अब आ रहा था सेवेंथ क्रेनियल नर्व की तरफ, विच इज़ द फेशियल नर्व. फेशियल नर्व लाइक द ट्राइजेमिनल नर्व इज़ अ मिक्स क्रेनियल नर्व और इसके मोटर और सेंसरी कंपोनेंट्स हैं. बट मोटर और सेंसरी कंपोनेंट्स के अंदर फाइबर्स हैं और फाइबर को हमने कैटेगराइज किया है जनरल, विजरल, एफरेंट्स और इफरेंट्स में. और एफरेंट्स में विजरा से रिलेटेड हैं, जनरल हैं, ये स्पेशल हैं. ये सारी बात हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं. फेशियल नर्व के अंदर मोटर कंपोनेंट के अंदर स्पेशल विजरल इफरेंट्स हैं और जनरल विजरल इफरेंट्स हैं. जनरल विजरल इफरेंट्स जो हैं वो आपके स्मूथ मसल्स से रिलेटेड होते हैं, ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर इनर्वेशंस होती हैं जनरल विजरल इफरेंट्स के अंदर. और जो स्पेशल विजरल इफरेंट्स है, स्ट्राइएटेड मसल रिलेटेड टू द ब्रैंकियल आर्च जो है वो उनकी इनर्वेशन होती है. इसी तरह जो सेंसरी कंपोनेंट है उसके अंदर आता है आपका स्पेशल विजरल एफरेंट्स. स्पेशल विजरल एफरेंट्स हमने बात की थी कि स्पेशल कुछ सेंसेशन जैसे स्मेल हो गया, विजरा जो हमारे जीआईटी ट्रैक होते हैं उसके अंदर विजरास होते हैं, उससे रिलेटेड जो स्पेशल सेंसेशन है विच इज ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट, गस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन, इनसे रिलेटेड स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड होते हैं स्पेशल विजरल एफरेंट्स वाले. तो ये तीन तरह के जो फाइबर्स हैं वो आपके मौजूद होंगे फेशियल नर्व के अंदर. तो चलते हैं देखते हैं कि इनमें कौन कौन से न्यूक्लियाइज होते हैं. तो न्यूक्लियाइज को हम देखते हैं. फेशियल नर्व इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द पॉन्स और पॉन्स के अंदर जो है वो तीन न्यूक्लियाई मौजूद हैं जो कि फेशियल नर्व के साथ एसोसिएटेड है. दीज न्यूक्लियाई आर द main motor nucleus, the sensory nucleus, and the parasympathetic nucleus. The main motor nucleus is responsible for the innervation of the muscles of the facial expressions and stability muscle, stylohyoid, posterior belly of digastric. ये दो मसल जो है वो suprahyoid मसल है. These both of these muscles are responsible to raise the hyoid bone upward. तो posterior belly of digastric and the stylohyoid muscle इनको इनर्वेट भी करेगा, स्टेबिडियस मसल को भी. और जो प्री ऑरिक्यूलर जो कान का हमारे एंटीरियर वाला एरिया होता है, प्री ऑरिक्यूलर मसल जो भी मौजूद होते हैं उनको भी इनर्वेट करेंगे. पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई सिक्रीटोमोटर, उसमें फाइबर्स होते हैं एंड इट इनर्वेट्स द सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड, lacrimal gland, palatine glands and the gland of nose, the small glands present in the nose, इनको जो है वो इनर्वेट करते हैं. सेंसरी न्यूक्लिया जो है इट इज रिलेटेड टू द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द sensation of the sensation from the anterior two-third of the tongue. Now coming to the course of the facial nerve. Facial nerve का course बताने से पहले I would like to tell you guys that it is very closely related to the derivatives of the second pharyngeal arch. Now it originates from within the pons. Pons के अंदर आपके पास सेंसरी न्यूक्लियस है, आपके पास मोटर न्यूक्लियस है. सेंसरी न्यूक्लियस से एक थिन सेंसरी रूट निकलती है, मोटर न्यूक्लियस से एक थिक मोटर रूट निकलती है. जो मोटर रूट है वो एब्ड्यूसन न्यूक्लियस जो वहाँ पे मौजूद है, एब्ड्यूसन न्यूक्लियस के मीडियली एंड पोस्टीरियरली रैप राउंड होती है. जैसे कि एक रैप राउंड हो जाती है, जिस तरह कॉलिक्यूलस होता है, कॉलिक्यूलस की तरफ से रैप राउंड हो जाती है और फिर जो है वो एंटीरियर साइड ऑफ द पॉन्स से बाहर इमर्ज होती है. बिटवीन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स का जो ग्रूव बनता है वहां से इमर्ज हो जाती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से. ठीक है, अच्छा, वहां से इमर्ज होने के बाद क्या होता है कि ये इंटरनल दोनों रूट्स जो है वो इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स की तरफ जा रही थी. इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स क्या है, आपको स्कल में पढ़ाया था. एक 1 सेंटीमीटर जितना जो है वो एक ओपनिंग है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर ही, उस ओपनिंग की तरफ जाती है और बहुत, क्योंकि ये इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स की तरफ होती है तो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती है विद द इनर ईयर. वहां से ये चली जाती है फेशियल कैनाल में. फेशियल कैनाल में ये बन गई दोनों रूट्स फेशियल नर्व. ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो टिम्पैनिक कैविटी के बिल्कुल मीडियली टिम्पैनिक कैविटी के बिल्कुल मीडियली ये इमर्ज होगी. आप यूं समझ लें कि आप इमर्ज हो गई. ठीक है, फेशियल नर्व जो है वो एक्सपैंड हो गई. एक्सपैंड होके इसने बना लिया जेनिकुलेट गैंग्लियन. इट हैज मेड अ जेनिकुलेट गैंग्लियन. इमीडिएटली सॉरी
Immediately distal to the geniculate ganglion, it will give off its branch, its first intracranial branch. This is the greater petrosal nerve. Okay? Then it will give off its second intracranial branch, which is the cauda tympani nerve and the nerve to stapedius. And then it exits through the stylomastoid foramen. Stylomastoid foramen के बाद exit करने के बाद it will continue its extracranial course now. So what will be the extracranial course after exiting from the stylomastoid foramen? It will now run anterior to the outer ear. ये जो outer ear है इसके anterior side पे होगी और यहीं पे आके ये pre-auricular जो muscle वाला area यहाँ पे innervate कर रही होती है. Then it gives off its first extracranial branch, which is the posterior auricular branch. Then it gives off its second extracranial branch, which is the nerve to the posterior belly of digastric, and then gives off a nerve to the stylohyoid muscle. अब किससे कंसिस्ट होता है? मोटर वाले पार्ट से, क्योंकि मोटी सी रूट है जो मेन ट्रंक है, इट इज मोटर इन नेचर. Then it will go to the parotid gland. It will not innervate the parotid gland. Remember this. It will just pass through the parotid gland और parotid gland में enter होने के बाद it will give off its further terminal branches. These terminal branches are somewhat like this. Yeah, it is situated like this. The thumb points towards the temporal branch. The finger points towards the zygomatic branch. The middle finger, the index finger, points towards the zygomatic branch. The middle finger points towards the buccal branch. The ring finger points towards the marginal mandibular branch, and the little finger points towards the cervical branch. Okay, so we are discussing the course of the facial nerve, and I am roughly drawing the facial nerve like this. Okay, as we discussed earlier, that it emerges from the pons. From the pons, it has a motor root and it has a sensory root. But in the pons, there is present abducent nerve nucleus. For example, this is the abducent nerve nucleus, and from this, wrapping around the abducent nucleus, a large motor root is emerging from the motor nucleus. This one is the motor nucleus, और यहीं से it is wrapping around the abducent nucleus anteriorly and posteriorly, medially and posteriorly. Sorry, not anteriorly, medially and posteriorly. This one is the midline. This one is the other half of the pons. Okay, let me draw the abducent nucleus over here as well. See, this one is the other half of the pons. This one is the one half of the pons. Medially and posteriorly, it is wrapping around the abducent nucleus, and then there comes a small sensory root from the sensory nucleus. यहाँ पे sensory nucleus भी है facial nerve का, और यहाँ पे motor nucleus है facial nerve का. ठीक है, यहाँ से there is coming a very thin root, and from here there is coming a thick root, which is the motor root. Both of these roots are emerging at point, and from this point it is called facial nerve now. This is the facial canal, and this is the facial nerve now. From this point, it expands at an area. This area is the geniculate ganglion. Immediately distal to the geniculate ganglion, there emerges a nerve. This nerve is the greater petrosal nerve. This nerve is the greater petrosal nerve, and from this, the facial canal is roughly Z-shaped. It's like this. It's roughly Z-shaped, and now the facial nerve will go like this. It has given off the greater petrosal nerve. Now the nerve will go like this. The main trunk is comprising of the motor part of this nerve. Now from this point, it is leaving the skull. This is stylomastoid foramen. From the stylomastoid foramen, it is leaving the skull, and now from this part, this is continuing its extracranial course. This was all the intracranial course, and this is now the extracranial course. From the extracranial course, it is immediately giving off a motor branch, which is the posterior auricular branch, and then it again gives off
a nerve to posterior belly of digastric. Then again it gives off a branch which is the nerve to stylohyoid muscle. These are the three branches which it gives off immediately after leaving the skull from the stylomastoid foramen. Now, before leaving the skull, just before leaving the skull above the stylomastoid foramen, it has given off one more branch, and this one more branch is the very important branch. This is chorda tympani nerve. So intracranially facial nerve पॉन्स से लीव करने के बाद इमर्ज हुई एंटीरियर सरफेस पे मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के दरमियान में, एंड फ्रॉम गोइंग इनटू द फेशियल कैनाल facial nerve has emerged to give off the geniculate ganglion, and immediately distal to the geniculate ganglion it gives off the greater petrosal nerve, and continuing its course around the internal acoustic meters it has given off one more branch which is chorda tympani. And then after that, from the stylomastoid foramen, just posterior to the styloid process there is present stylomastoid foramen, and from that foramen it leaves the skull and now continues its extracranial course. From that it immediately gives off the motor branch which is the posterior auricular branch. This one is the first branch it has given off after leaving the skull, and then it also gives off the nerve to the posterior belly of digastric, and then gives off another branch which is the nerve to the stylohyoid muscle. And then from that it continues to go and it reaches the parotid gland. In the parotid gland, remember it does not innervates the parotid gland, it just passes through the parotid gland, and then it gives off 5 terminal branches. These 5 terminal branches are temporal branch, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical branches. So this was its course. Let's discuss the motor functions of the nerve. This nerve innervates many muscles of head and neck, and the first branch given off by the facial nerve is the nerve to stapedius, that is the motor branch. The greater petrosal nerve is the parasympathetic secretomotor nerve. Nerve to stapedius innervates the stapedius muscle between the foramen and the parotid gland, that is in the extracranial course. It gives off 3 branches which is posterior auricular branch, innervating the extrinsic and intrinsic muscle of outer ear and occipital part of occipitofrontalis muscle. Also posterior belly of digastric, nerve to posterior belly of digastric innervates the posterior belly of digastric, and nerve to stylohyoid innervates the stylohyoid muscle. The 5 terminal branches innervates the muscles of facial expressions. The temporal branch innervates temporalis, orbicularis oculi and corrugator supercilii muscle. The zygomatic branch innervates the orbicularis oculi muscle. The buccal branch innervates the buccinator muscle, orbicularis oris muscle and zygomaticus muscle. The marginal mandibular branch innervates depressor labii inferioris, depressor anguli oris and mentalis muscle. The cervical branch innervates the muscle of the neck which is the platysma muscle. Special sensory functions are carried by the chorda tympani nerve. It carries the sensation from the anterior 2/3 of the tongue. How does it occur? For that we have to see the course of the chorda tympani nerve. Let's see the course now. When this branch is given off by the facial nerve into the facial canal, it travels across the bones of the middle ear, and from that it goes from the petrotympanic fissure and enters into the infratemporal fossa. In the infratemporal fossa, what happens is this nerve unites with the lingual nerve. Anterior 2/3 nerve को टंग को इनर्वेट कर लेगी, बट लिंगुअल नर्व्स को भी जाके इमर्ज हो जाएगी, उसे हम बाद में देखते हैं. Parasympathetic functions are carried by both the chorda tympani and the greater petrosal nerve.
ग्रेटर पेट्रोसल नर्व डिस्टल टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन निकलती है। इस पिक्चर को देखिएगा। Appreciate the presence of geniculate ganglion over here, circled, highlighted, and then distal to it is the greater petrosal nerve. What happens is the greater petrosal nerve moves anteromedially, exits the temporal bone, and after exiting the temporal bone, it obviously enters the middle cranial fossa. When it has exited the middle cranial fossa, it unites with the deep petrosal nerve, and it becomes the nerve to the pterygoid canal. Now obviously it is in the pterygoid canal and it will go through the pterygopalatine fossa and will synapse with the pterygopalatine ganglion. Ganglion की branches जो निकलेंगी वो innervate करेंगी mucous glands of the oral cavity, nose, pharynx and lacrimal gland. और यही वो कोर्स है कॉर्डा टिम्पेराई का विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाने के बाद ज़्यादातर चंक नर्व का इनर्वेट करेगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को, बट कुछ हिस्सा लिंगुअल नर्व की तरफ चला जाएगा और मर्ज हो जाएगा, एंड देन आफ्टर मर्जिंग इट विल बिकम सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. द ब्रांचेस फ्रॉम दैट गैंग्लियन विल इनर्वेट द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. Now this is how chorda tympani and greater petrosal nerve carries the parasympathetic fibers.